So class 10th, in this question it is given that if x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta, we have to show that ki x square plus y square plus z square is equal to r square. Clear hai? What we are going to do here, first of all we have to take square of all the equations. ठीक है? So x is equal to r sin theta into cos phi, squaring both sides. So x square is equal to r square sin square theta into cos square phi. In the same way, second condition में भी हम स्क्वायर लेंगे बेटा, और थर्ड कंडीशन में भी हम स्क्वायर लेंगे. So in the second equation, after taking square, y square will be equal to r square sin square theta into sin square phi. ठीक है? And in the third equation, after taking square, it would be equal to z square is equal to r square cos square theta. Clear hai? Now we have made another three equations. ठीक है? इन तीनों को बेसिकली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ and sixth. Clear hai? So in the left hand side it would be x square plus y square plus z square, and in the right hand side it would be r square sin square theta into sin square phi, sorry, cos square phi, cos square phi plus y square की वैल्यू r square sin square theta into sin square phi plus z square की वैल्यू r square cos square theta. ठीक है? अब आप बेटा यहां पे इन दोनों टर्म को देखिए. इन दोनों को टर्म में अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म में कॉमन वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो आफ्टर टेकिंग कॉमन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी बेटा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है? Cos square phi plus sin square phi will be equal to 1. So this would be r square sin theta plus r square cos square theta. यहां पर बेटा आप r स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, sin square theta plus cos square theta. Again sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Hence x square plus y square plus z square will be equal to r square. And this we had to prove. Clear?